I now request you to kindly felicitate Dr. Vineet Joshi ji, Secretary, Higher Education, Government of India. Sir, may I now request you to felicitate Dr. Sunil Kumar Barnwal ji, Additional Secretary, Department of Higher Education, Government of India. Thank you, sir. To formally open today's proceedings, I invite Dr. Sunil Kumar Barnwal, Additional Secretary, Higher Education, Government of India, to deliver the welcome address. Good morning. It's indeed my pleasure and privilege to welcome Honorable Union Minister for Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, who is the chief guest for this 2 days conference of Vice Chancellor. Indeed, we are grateful for his taking out time from his busiest schedule and being with us to inaugurate the conference. And it's not just the inauguration of the conference. He has prioritized his time to give for full 2 days to be with us during the conference. So I really, from the bottom of the heart, we welcome you, sir, to this 2 days conference. On this occasion, I welcome Honorable Chancellor of Central University of Gujarat, Shri Hasmukh Adhia ji, who is a well-known figure not just in Gujarat, also at the national level. He has served in different capacity to Government of Gujarat as well as to the Government of India. I welcome you, sir, to this conference. On this occasion, I welcome Honorable Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Shri Vineet Joshi ji, under whose guidance this conference is being organized. He has been instrumental not only in organizing this event, but also in selecting this place, Kevadia, for this conference. So I indeed welcome you, sir, for this conference. I welcome Honorable Vice Chancellor of Central University of Gujarat, Shri Ramasankar Dubey ji, who has really worked hard for last 1 month in making this conference a big success. I must tell you, while this conference is being organized under auspices of Ministry of Education, it's the Central University of Gujarat who has been hosting and organizing it at the place Kevadia in Gujarat. So indeed we are thankful and welcome you, sir. I welcome all the distinguished Vice Chancellors who are participating in this conference. Vice Chancellors who have come from all across the countries, who belong to different central universities and select deemed to be universities. I welcome you all to this conference, which is first of its kind to be being organized especially for the central universities. So indeed we welcome you to this conference. I welcome all the distinguished expert speakers who are here present and who will be guiding on different thematic sessions during the conference, and many of them are with us for the whole 2 days. I welcome you, sir, to this conference. And I also welcome all the senior officials of Ministry of Education and University Grants Commission who have worked hard in organizing this conference. We all know today is a very auspicious day of Guru Purnima, and on this day we are organizing conference of all Kul Gurus,
is indeed a great occasion, and in fact, there could not be any better day to hold such a conference for distinguished teachers or gurus of this country. Further, this conference also gets huge significance in the backdrop of completing 5 years of national education policy, which we are going to celebrate 20 days down the line on 29th July. While we celebrate the 5th anniversary of national education policy, this conference becomes important and provides an opportunity to assess and evaluate our journey in implementation of NEP. While doing so, it is important to re-emphasize the broad objective of national education policy, and we all know the 5 pillars on which this policy really seeks to make India a global hub of education are extremely important, and these are access, equity, quality, affordability, and accountability. I think during the conference, we will be discussing on each of them and will be deliberating through these 2 days. With the mandate to provide high quality education and conduct of cutting edge research, central universities play a pivotal role in shaping the educational landscape of country. While central universities have demonstrated significant momentum in embracing NEP reforms, disparities remain in terms of depth, consistency, and impact of the reform. So this conference will provide an opportunity to undertake critical review of institutional progress and collectively shape the path ahead. In the next 2 days, the conference would provide us ample opportunity for peer learning, knowledge exchange, and sharing our best practices. The best part of this conference, I must mention, sir, today, that in this conference, all the Vice Chancellors have been involved for last 20 days in groups for preparation on each of the thematic sessions, and their presentation during the technical sessions would reflect their collective insight into challenges and the road ahead. They have also worked on the outcome paper for each session, which would get finalized after the conference and would act as their collective roadmap for the future. We all know Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat is not just a dream, it is our shared responsibility. And with your active participation in this conference, it would reaffirm our shared responsibility of building a strong, inclusive, self-reliant, and enlightened Viksit Bharat by 2047. The place Kevadia signifies unity, vision, and progress embodied by the iconic Statue of Unity. The world's tallest 182-meter tall statue of our Iron Man and the first Deputy Prime Minister and the Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, who is the architect of unified India, provides huge inspiration for building a stronger nation. The serene and captivating surrounding of the place provides ideal environment for all of us to deliberate on several path-breaking ideas. Let us make the best of this opportunity to connect, learn, and inspire. Together, let us pave the way for a future that is innovative, inclusive, and prosperous. Once again, I welcome you all to this conference and wish a great success with your active participation. Thank you. Thank you, sir, for your warm and thoughtful welcome address. Now, I request Dr. Vineet Joshi ji, Secretary, Higher Education, Government of India, and Chairman UGC for opening remarks. Sir, please.
Honorable Union Minister of Education, Hon Honorable Chancellor Central University of Gujarat, Honorable Vice Chancellor Central University of Gujarat, my colleague Shri Barnwal, distinguished academicians, esteemed Vice Chancellors, senior officers from the Ministry and UGC, distinguished guests, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all to this two-day Vice Chancellors Conference of Central Universities here in the serene surroundings of Kevadia. This gathering is not merely a formal event, it is a collective reaffirmation of our shared responsibility to shape the future of higher education in India. We meet today at a transformative moment as we complete 5 years of the launch of New National Education Policy 2020. This conference provides us with an opportunity to reflect on our progress so far and refine our roadmap towards achieving a vision of holistic, multidisciplinary, inclusive, affordable, and globally competitive higher education system. The NEP 2020 laid down an ambitious, yes, achievable vision for India's higher education system, which is rooted in accessibility, Indianness, equity, quality, affordability, and accountability. It reimagines our institutions not as degree-granting bodies, but as ecosystems of innovation, critical thinking, research, entrepreneurship, and holistic development. The past 11 years have seen our central universities take significant strides in reimagining the higher education landscape, from the adoption of the 4-year undergraduate program to the digital transformation enabled by Swayam Plus, Samarth, strengthening research ecosystems and promoting Indian knowledge systems. Your leadership has played a vital role in translating this vision into practice. Over the next 2 days, through 10 carefully designed thematic sessions, we will deliberate on areas that lie at the heart of NEP 2020, which is flexible learning, academic mobility, research excellence, governance reform, and inclusion. These discussions will not only help us take stock of where we stand, but more importantly, where we need to go to realize the aspirations of Viksit Bharat at 2047. Over the next 2 days, we will engage in 10 focus sessions covering themes such as FYUP, future of work, digital education, equity and inclusion, education in Bharati Bhasha, Indian knowledge system, research and innovation, ranking and accreditation, internationalization, and faculty development. We are also at a stage where collaborative leadership is the key. The collective wisdom in this room can help us shape institutional strategies that are locally grounded but globally competitive. Whether it's strengthening equity, embracing Bharati Bhasha and Indian knowledge systems, or preparing for the future of work, your institutions are uniquely positioned to lead by example. Esteemed Vice Chancellors, please realize that your role is not limited to your institutions only. Central universities are pace-setter institutions. Anything that you do in your institution will be followed by many around you, especially the state universities and the colleges. So you carry a double responsibility, which will require a commitment that is unshakable. Therefore, let us seize this moment with clarity of purpose and collective commitment to make our universities instruments of national development and global excellence. I thank you once again for your presence and look forward to insightful guidance by the Honorable Shiksha Mantri Ji, Honorable Chancellor of Central University of Gujarat, and expert discussions and the outcomes. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your insightful remarks.
We now look forward to a thought-provoking address by on the 6 principles of Karma Yoga by Dr. Hasmukh Adiyaji, Honorable Chancellor, Central University of Gujarat. I now request respected sir to address the gathering. On the occasion of Guru Purnima, the auspicious day of offering our respect to the Guru, I bow before all of you who have been the teachers of higher education in the system. My respectful pranam to Honorable Minister for Education, who will go down in the history for his remarkable achievement of coming out with the new education policy, the national education policy, 5 years ago. It is the second education policy in the history of independent India that somebody has thought about. And the way Honorable Minister has led this entire initiative of consultation with so many people, and with his own personal interest that he has put in, the policy has really come out very well. I am glad, sir, that this initiative, I'm told that this is for the first time that a conference of all the central universities is being organized, which is a good thing. And that too, we are going to discuss the implementation of national education policy. So it's a wonderful opportunity, and my compliments to the Ministry of Education for having thought about this initiative and also for keeping it in the state of Gujarat. In the national education policy, sure, one of the aspects that we need to cover is the emphasis on the Indian knowledge system, IKS. And a lot has been done already to develop the idea of IKS, to develop the syllabus for IKS, and to sort of try to implement it in various degree programs wherever possible. Today I'm going to touch upon the concept of Karma Yoga, which is at the foundation of Indian knowledge system. It is the concept of Karma Yoga which only can motivate each and every citizen of this country to achieve the goal of Viksit Bharat. Because so far, we have behaved with a slave mentality, we have sort of had a compromise in quality kind of mentality in our society. If we have to spur everybody to action, and that also rightful action, without selfishness, without ego, then it's only the concept of Karma Yoga which will come to the rescue. And that's why I thought I will systematically put before you the concept of Karma Yoga, what are the 6 components of Karma Yoga. The question is, why Karma Yoga? First of all, the central theme of Bhagavad Gita is Karma Yoga. As you know, the concept of Karma Yoga is given to Arjun in the given context. But it also applies to all of us, and we need to follow the concept of Karma Yoga. It is if you follow the principles of Karma Yoga, the 6 principles of Karma Yoga, your action can become yoga itself. Your action can become an instrument of Punya Karma. And your action can become stress-free. You are completely stress-free. When you are doing anything, however serious it may be, as yoga, then you can become stress-free also. So this is why the concept of Karma Yoga is very, very important. But probably most of us have got only a scant idea of what is Karma Yoga. But if we understand the
totality of Bhagavad Gita and the various messages given by Bhagavad Gita, there are 6 things which come out in Karma Yoga, which we have to follow. Then only it is called Karma Yoga, otherwise not. So we talk about these 6 principles. What is the first one? The first one is Swadharma Anushthan, Swadharma Anushthan. Playing our role in life with utmost diligence, without negligence, without carelessness, top class quality in whatever we try to do, never neglecting anything that we are given, whatever job we are given, never neglecting it, trying to put in our best in whatever role we have accepted in the society is the first principle of Karma Yoga, Swadharma Anushthan. Swadharma is what is the role that you have chosen in the society, that is your Swadharma. Having chosen that role, you cannot neglect it. One has to do it with most diligence. So, first principle of Karma Yoga, Swadharma Anushthan. The second one, giving up attachment to selfish gain. Giving up attachment to selfish gain. Never thinking that what will I get out of this personally. For an organization, you can always have planned goals for the organization. But if you say that I will do this only if I am likely to be promoted, or only if the government gives me an award, then only I am willing to do it, then that is not Karma Yoga. It's a selfish gain for which you are working. Incidentally, the good work will never go unnoticed. There is a principle of karma phala sambandha. So any good work done by anybody, ultimately it will be recognized. But to link it to a particular personal objective, selfish objective is not required. And that is against the Karma Yoga. So when you begin the karma, don't think that I will get Padma Shri, Padma Vibhushan for this. No way. You have to keep on doing your work properly and not link it to any selfish gain. So that is the second principle of Karma Yoga. The third one, we have to trust in the justice system of God. Now this is unique to the Hindu philosophy. Also other philosophies do believe that there is a karma phala sambandha. So most of the religions and most of the philosophies of the world do believe that if you do good karma, you get good results in life. And if you do bad karma, you will meet with bad results. The only difference between Hindu philosophy and other philosophy is that in other philosophy, it is limited to this birth. That if you do good karma, in this birth you get good phala. But in Hindu philosophy, it is spread across past births also. And that's where we are better placed, because there is a rationale behind somebody not getting good result in spite of doing good work in this birth, because it is linked to the karma of previous birth. So karma phala sambandha philosophy is unique, and that's what you have to believe in. Otherwise, you will not be able to carry on with same amount of enthusiasm in life. If you don't believe in the karma phala sambandha theory, anything that happens to you is because of your own karma, whether of this birth or of the past birth. And so you cannot ask a question to God, why me? That question cannot be asked because it is our karma which is coming back to us in life. So having a deep trust in karma phala sambandha is absolutely a must for us to do Karma Yoga. As we know, there are 3 types of karma which are prescribed, which are there, not prescribed, which are there in the philosophy. One is Sanchit karma, the accumulated stock of all our past karma, of all the past births, millions of births we must have taken. And the accumulated stock of all the past birth is Sanchit karma. The second is Prarabdha karma. Out of the total stock that we have accumulated in so many births, when we take particular birth in this time, a portion out of it is given to us as Prarabdha karma. So something which we are born with, and that is only one portion of the Sanchit karma, not entirely.
The rest of the Sanchit Karma is yet to be manifested in life, in future life. But one portion which comes to us in this life is called Prarabdha Karma. And then there is a third type of karma, Agami Karma. The freedom given to you by God to make a difference to the country, to the society in this birth. You got a human birth and God has given you that liberty to choose what you want to do in your life. And that is a part of Agami Karma. So while there is Prarabdha Karma which constrains certain things in our life, but it also gives us the freedom to do what we want to do as Agami Karma. So all these three are important in our life and we must understand what is Sanchit Karma, what is Prarabdha Karma and what is Agami Karma. To give you an example of Sanchit Karma, here is a person who is wielding arrow, bow wielder. He is a Dhanurdhar. Dhanurdhar has got some kind of a stick, some kind of bows in his case behind. That is Sanchit Karma, all the bows that he has in his case. There is one arrow which is in the air already. That has become a Prarabdha Karma. We cannot pull it back. There is no way we can pull it back. So that is a Prarabdha Karma. We can do nothing about it. So there is something in life which we have come with, Prarabdha, and that we cannot avoid. We have to stay with Prarabdha. But there is a arrow in the hand of a Dhanurdhar, which is Agami Karma. He can use it to protect the good people of society, or he can use it to harass the good people of society. This is a choice with him, and that is Agami Karma. He has still not used it, but he can use it for either of the thing, either good thing for the society or bad thing for the society. So this is how you explain this. The fourth principle, having done your karma, different kinds of results will come in your life, some good, some bad. Acceptance of the result is a part of Karma Yoga. Acceptance, but dynamic acceptance. It's not a passive acceptance. हाँ ठीक है, एक बार प्रयत्न कर लिया, नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं? Not like that. There is a passive acceptance. Try your best to make a difference. Try your best to achieve the result. But in spite of all the things that you have tried, if the results don't come forth, you have to accept it and move on. Dynamic acceptance of results. I've seen many bureaucrats giving up in life, saying कि सरकार ने मुझे इतना क्यों अन्याय किया? I didn't deserve this. I have been transferred. Government didn't treat me well. I will not do anything in my life now. What's the point in talking like this? Whatever has happened has happened. It's a part of your Prarabdha Karma also probably. But now one must move on. And that's what is very important. Dynamic acceptance of result is a very good thing. We have to accept the result as a phala of our own karma, either of this birth or the past birth. We cannot stop there and say कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा. We have to accept it. If you don't accept the result, you will suffer more in life and you will stop progressing in life. And that's why dynamic acceptance of result is a must. Fifth principle, absence of ego in performance of duty. There is no reason for any one of us to have any ego in anything that we do, howsoever superior it may be. Anything that is achieved in life has been possible because of your parents who brought you up. Your parents gave you good sanskar. You got good teachers in the school who motivated you to work hard. You got some good college professors who guided you to go to a particular career. And after all this, if you achieve something, there is no reason for you to have ego and say that I did it myself. No way. There is nobody who does it himself. Everybody is sort of getting some benefit of somebody from the society. Even a businessman who has made it a success in life, made millions and billions of rupees, he cannot say that it is my skill only which has worked. The government policies must have been positive at that time. The society must have cooperated.
It must have been the demand of the time, and that's why they succeeded as a businessman. So there is no place for ego in Karma Yoga. We have to be always humble. Whatever we do, it is all, we have to do our thing with Ishwararpan Buddhi. Whatever happens is because of God, and we have to offer it to God. That is the way we have to accept good or bad results without any ego. And the last principle is sharing fruits of action. If God has been kind to you, if God has given you something good in life, then you should share it. Even a portion of our salary or a portion of whatever we are earning, we are supposed to use it for society, for donation. This is prescribed in all the religions. All the religions have importance of giving donation. So we should share fruits of action. If it is not money that you have been endowed with, and if it is a knowledge that you've been endowed with, one must try to share that knowledge also to the society. And that also without any benefit. Free. Sharing your knowledge. Whatever you have. And if you've got a lot of credit also, then you should share it with your colleagues. Suppose your organization has got an award, then you have to say it is because of the so many efforts of so many professors and so many teachers and so many students. You are not the only one. So that way you have to share the credit, you have to share the monetary benefits you get, and you have to share the knowledge also. So sharing fruits of action is very important. Finally, these are the 6 steps I told you already. This is a personality typologies in Indian philosophy which you must use. This is a core part of Indian knowledge system. These are personality typologies of Indian philosophy. There are 3 types of gunas which are mentioned in Bhagavad Gita. Chapter 14, 17 and 18 elaborately talks about sattva, rajas and tamas. There are some people who are predominantly sattvic, who are predominantly rajasic, and there are others who are predominantly tamasic. So what are the different qualities of each one of this? This is what is described in this chart. So if you come to predominant quality, a sattvic person is the one whose predominant quality is knowledge. He is a knowledgeable person, sattvic person. If it is a rajasic person, his predominant quality is desire for worldly achievement. He will be very active and he wants to achieve the sky. He will say, I want to do this also, I want to go there also, I want to be the best teacher in the world or something like that. Those kind of desire for worldly achievements he will have, rajasic person. And a tamasic person will be generally, his predominant quality is ignorance and negligence of work. He will be lackadaisical, slow, lazy, ठीक है चलता है, ऐसा करके उसकी quality होगी. If you come to attitude to duty, sattvic person's attitude to duty is nimitta bhav. I am only an instrument in the scheme of God. God has put me in this place, and I am only trying to play my role as an agent of God. That kind of an instrumentality he has, nimitta bhav, or vritya bhav. I am a servant of God. Either he thinks I am a servant of God, or he thinks I am only an instrument in the hand of God. Either way. That is a sattvic person's attitude to duty. A rajasic person will have doership. His attitude to work will be, I can make it happen. I will do it. Let me show to the world what I can do. This is the feeling of a rajasic person. And the tamasic person will have, he will have no desire to do anything. So attitude to work will be very, very warm, lukewarm attitude to work in case of a tamasic person. And when it comes to result, when the results come, how will sattvic person behave? How will rajasic and how will tamasic behave? So a sattvic person will take it as prasad buddhi. Prasad buddhi means what? Accepting any result that comes in life as prasad of God. When you go to a temple, whether you are given a bitter prasad as per the tradition of the temple or a sweet prasad, do you ever say no?
Do you say कि नहीं मुझे करेला अच्छा नहीं लगता तो करेला का प्रसाद नहीं लूँगा मैं? We never say no to prasad. So similarly, any result that comes, Sattvic person will gladly accept it. And that is called prasad buddhi, with prasad buddhi. A Rajasic person will not accept unpopular results. He will say, I want result by all means, by hook or crook. He will only be wanting results by any means. So that is what is the swabhav of a Rajasic person. And the Tamasic person will have a passive acceptance कि ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, हम इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते. इस तरह का फेटलिस्टिक एटीट्यूड होगा तामसिक पर्सन का टुवर्ड्स रिजल्ट. उस तरह से वो एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन ग्रजिंगली ही विल एक्सेप्ट, नॉट लाइक ए सात्विक पर्सन. सात्विक पर्सन विल ऑल्सो एक्सेप्ट वट एवर रिजल्ट कम्स एज प्रसाद बुद्धि, बट ए तामसिक पर्सन विल एक्सेप्ट इट एज ए ग्रजिंगली कि ठीक है भगवान ने दिया है तो क्या करें. How do you recognize a sattvic person if you meet someone? A sattvic person will always be happy and peaceful. His mind is always peaceful. You will find radiating smile on his face. And quite a few saints you find like that. They are always radiating smile. They are peaceful. There is no agitation of their mind because they have more of sattva in them. In case of Rajasic person, you can easily make out that he is Rajasic by his level of activity, his restlessness of mind. एकदम माइंड चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा उसका. तो restlessness is the predominant way you can recognize a Rajasic person. And the Tamasic person will have a dull face, always dukhi, sad, because he doesn't want to do anything in life to change his position. He just wants, he is static, and so he will always be unhappy, and he will always look unhappy also. So this is the thing. So here, let me tell you, nobody is purely sattvic, nobody is purely rajasic, and nobody is purely tamasic. There is a combination of all three. So a person who is predominantly sattvic, second number rajasic, and third number tamasic, he is called sattvic in a way, because more than 50% is sattva guna in him. And similarly, Rajasic person will have predominance of rajas, second quality may be sattva, and third may be tamas in case of a Rajasic person. So nobody is pure sattvic, pure Rajasic, it's always a combination. All three gunas are there. So this is what we are doing. How do you, if you are at a particular level, how do you move up in chain? This is the methodology. Our philosophy says that there is no direct movement from tamas to sattva. You have to go through the route of rajas. So people who are tamasic, you have to ask them to first do selfish actions. You have to make them rajasic by showing them some kind of an incentive to do that. जो सात्विक लोग हैं उनको एक बार कुछ न कुछ इंसेंटिव देके काम कराना है उनसे. So from sattva you can go to rajas, and after you become rajasic, after you are working for selfish gain, and after you become active, then a stage will come, then a person can easily go into sattva and he can become a sattvic person. There is no direct route from tamas to sattva. One has to go through rajas. And so if most of us, and I believe so because we are all very active in life, most of us are predominantly rajasic. We are not tamasic, otherwise we wouldn't have reached at this place. So if we are predominantly rajasic, for us it is only one step more. We can easily move. If we have done our work properly, if we have done our duty properly, as karma yoga, a time will come when there will be enough purity in our mind. Chitta suddhi ho jayegi. Enough purity in our mind, and we will easily go into sattvic mode. Easily. It will be easy for us to do that. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening address. Your reflections on the principles of Karma Yoga offered profound guidance and academic leadership and institutional development. And now, the moment we all have been waiting for, it is our proud privilege to welcome our chief guest, Shri Dharmendra Pradhan ji,
Honorable Minister of Education, Government of India. He has been instrumental in driving the implementation of National Education Policy 2020 with a strong focus on transforming our education system into one that is holistic, inclusive, and future-oriented. Under his leadership, significant strides have been made towards building a Viksit Bharat through education, innovation, and skill development. It is my great honor to invite our respected chief guest to deliver the inaugural address. Please welcome him with a big round of applause. नमस्कार। पवित्र गुरु दिवस के अवसर पे भारत की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर की चिंतन शिविर में मंच पे उपस्थित देश के जाने माने प्रशासक, शिक्षाविद तथा उनको अगर हम कर्मयोगी कहे वो उचित होगा, ऐसे डॉक्टर हसमुख आढ़िया जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदरणीय सचिव डॉक्टर विनीत जोशी जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी तथा आज इस कार्यक्रम की 2 दिवसीय इस शिविर की मुख्य पुरोधा आयोजक गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आदरणीय वाइस चांसलर रमाशंकर दुबे जी तथा सभी महानुभाव भाई और बहनों और अन्य साथीगण, मित्रों, हम सबकी सौभाग्य है हम लोग एक अच्छे प्रसंग को लेके अच्छे मन से पवित्र गुरु दिवस के अवसर पे 2 दिन के लिए एकत्रित हुए हैं और इसकी गंभीरता और बढ़ी। मैं इसे आढ़िया जी को बहुत सालों से जानता हूं, यानी पिछले 11 साल से जानता हूं। उनके बारे में पहले से थोड़ा सुना था, लेकिन पिछले 11 साल से उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम करने का अवसर मिला, इसलिए मैं उनको जानता हूं। वो भले ही जीविका में प्रशासक रहे, लेकिन वृत्ति में वो शिक्षाविद हैं, एक मौलिक चिंतक हैं। उन्होंने जिस तरह की आज एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया, शायद आने वाले 2 दिन हम जो समय बिताएंगे आपस में विचार विनिमय होगा, निश्चित रूप में ये हमारे लिए एक मार्गदर्शिका, पाथवे और हैंड होल्डिंग करने के लिए एक हमको अवसर मिलेगा, अवसर देगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं आज की उद्घाटन सत्र में उनकी विषय रखने के लिए। मित्रों, हम लोग एक इस समय में एकत्रित हुए हैं जिसकी हर एक कालखंड की हर एक समय का एक अपने आप में महत्व रहता है। इस समय में हम लोग जब एकत्रित हुए हैं और हमारी दायित्व बनती है भारत के बारे में चर्चा करना, भारत की बौद्धिकता के बारे में चर्चा करना, केवल चर्चा नहीं करना, उसको आगे कैसे ले जाना, समय के हिसाब से टाइम अप्रोप्रिएट, कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट हम उसको कैसे ले जाएंगे, इस प्रकार की दायित्व इस गुरु समूह के कंधे पे है, ऐसे मैं मानता हूं। मित्रों, भारत एक प्रजातंत्र है। विश्व सभ्यता में अनेक प्रकार की व्यवस्था प्रणाली जारी है। सबकी अपनी आप परफॉर्मेंस अप्राइजल होती है, एक उपलब्धि की समीक्षा होती है, उनको कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक बढ़ती हुई अर्थनीति में, एक इमर्जिंग इकोनॉमी में जिसने डेमोक्रेसी को अपना पाथवे माना, उसमें जिसकी विरासत भी है, ऐसा नहीं कि हमें कोई नया देश नया राष्ट्र है, जिसकी कुछ विरासत है, उस बैकग्राउंड में हमने अनेक चीज उपलब्धि किया है। हमारी लंबी विरासत है। हमने आज़ादी के उपरांत यानी 47 के उपरांत
पिछले लगभग 7 दशकों में अनेक चीज उपलब्धि किया, इसीलिए आज हम इस मंच पे एकत्रित हुए हैं। अभी आडिया जी अपने विषयों को रखते हुए उन्होंने कहा, अगर हम सात्विक ना होते, अगर हम सिर्फ तामसिक होते तो यहां नहीं पहुंचते। हम राजसी गुणों वाले हैं, हमारे अंदर सात्विकता निश्चित रूप में है। मित्र, रेस एमंग इक्वल्स में जिसमें गुण होता है वो ऊपर जाता है। हम सब इस दायित्व में आए हैं, ना हमारे पास कुछ ना कुछ भगवान प्रदत्त गुण है। मित्रों, इस समय में हमारे सामने कोई भी इस प्रकार के जब शिविर में एकत्रित होते हैं, उसके एक उद्देश्य रहता है, उसकी एक फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन हमारे सामने हुई। मैं कुछ समय में आने वाले 10-15 मिनट में थोड़ा उसकी जो मेरे मन में जो उसकी टारगेट के बारे में आ रहे हैं, हमारी स्पेसिफिक कोई भी विषय को लेकर जब हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, उसकी एक पूरा डिटेलिंग होने की आवश्यकता होती है। उसको बहुत पहले से योजना बनानी पड़ती है, और उस लक्ष्य और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर एक ही प्लेट में ज्यादा लोग समझेंगे और काम करेंगे, तब जाकर वो लक्ष्य पूरा होता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 चीज हमारे सामने रखा है। रखा तो अनेक चीज है, लेकिन जब हम वाइस चांसलर्स की चिंतन शिविर में एकत्रित हुए, मैं आपको कहूं 2 चीज हमारे सामने प्रमुखता से लक्ष्य करके हैं। हमारे सामने लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक स्तर तक ले जाना। उसको कहा गया डेवलप्ड नेशन में हम खुद को परिवर्तित करेंगे। क्या डेवलप्ड नेशन की जो आज वैश्विक परिभाषा है वो हमारी परिभाषा होनी चाहिए, या हम डेवलप्ड नेशन की, एक समृद्ध राष्ट्र की, विकसित राष्ट्र की अपना पैरामीटर्स भी बना सकते हैं, अपने वैल्यूज भी बना सकते हैं। भारत ऐसे ही धनी देश है, यानी संस्कृति से, विरासत से हम अपना ही पैरामीटर बना सकते हैं। कोई भी सोसाइटी में इस प्रकार की वर्णन समाज की और दायित्व की और नागरिकों की कर्तव्यों के बारे में इतना होलिस्टिक चिंतन कभी नहीं हुई होगी। यह हमको कर्मयोग की तत्व हमको विरासत में मिली है। इसलिए जो डेवलप्ड नेशन की लक्ष्य हमारी 2047 है, तो मैं एक बार आपके सामने कहना चाहूंगा, मोहर रखूंगा, वो भारतीय मॉडल ऑफ डेवलप्ड नेशन होनी चाहिए। पाश्चात्य की चौकाचौंध भौतिक चाहे 6 उपलब्धि को हम डेवलप्ड नेशन ना माने। जब हम 47 तक पहुंचेंगे, एक प्रजातंत्र की मार्ग में पहुंचेंगे। प्रजातंत्र की अपने आप में एक पेन रहती है, एक चुनौती रहता है कि हम वाइस चांसलर होके जो हम निर्णय करते हैं वो सच में हम प्रजातंत्रिक करते हैं। हमारा एक दायित्व है, हमारा एक भूमिका है, लेकिन उस भूमिका को निभाते हुए हमने सभ्यता की जो चरित्र है, हमें परामर्श करके करना, चर्चा करके करना। ये सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के विषय नहीं है, लेक्चर्स की विषय नहीं है, प्रवचन के विषय नहीं है, प्रजातंत्र प्रैक्टिस की विषय है। उस प्रजातंत्र को प्रैक्टिस करते हुए जब हम 2047 की भारतीय पद्धति ऑफ डेवलप्ड नेशन, भारतीय व्यवस्था के आधार पे, भारत की विरासत के ऊपर, संस्कृति के ऊपर हम डेवलप्ड नेशन की परिकल्पना कर रहे हैं, मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे जिम्मेवारी शिक्षा जगत को है। उसमें से उच्च शिक्षा जगत को उसको लीडरशिप देने की आवश्यकता है। मित्रों, आज हमारे सामने अगर हम पिछले 11 सालों की, जिसे अभी आडिया जी ने कहा कि भारत में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संयोग से 2020 में, हम कहे 2020 में, लेकिन 2014 के उपरांत उस विषय में चिंतन मनन शुरू हुई थी। धीरे धीरे उसको 6 साल लगा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने में, एक फिलोसॉफी के नाते उसको सामने ले आने में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने एक क्लैरिटी की पथवे है हमारे सामने। जब अगर हम उस 10 साल की, पिछले 10 साल की, 11 साल की एक समीक्षा करते हैं, 2014-15 की बेसलाइन डाटा से आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। उसमें से महिलाओं की सबसे ज्यादा हुई है 38%। हमारी पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है, हमारी
शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स की 14 की तुलना में अभी 10% ग्रोथ हुई है। एससीज की, शेड्यूल कास्ट की हमारी 8% ग्रोथ हुई है। हमारी यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ी है, हमारी कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, और हमारे सामने आज लक्ष्य है 2035 तक, हम 2035 तक इसको 50% तक पहुंचाएंगे। भले ही एनईपी में उसको 50% लिखा है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति थोड़ा उसमें से ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है। मित्रों, मैंने कभी एक हिसाब लगाया कि भारत की जन्म पंजिका को, बर्थ रजिस्ट्रेशन को अगर हम देखेंगे तो हर एक एज ग्रुप में लगभग आज की बर्थ रेट के हिसाब से लगभग एब्सोल्यूट नंबर में 2 करोड़ लोग होते हैं। अगर हम उच्च शिक्षा में जो एज ग्रुप है उसमें आज हमारी जीईआर लगभग 4.5 करोड़ हुआ है एब्सोल्यूट नंबर में, और ये 26-27% है। इसको लक्ष्य हमारी है 50% करना आने वाले 10 साल के अंदर, और ये संख्या एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ के हो जाएगा लगभग 9 करोड़। क्या आबादी में उतने ही लोग होंगे 9 करोड़ उस एज ग्रुप में? नहीं। हमारे सामने वाइस चांसलर्स मित्रों के सामने, गुरुओं के सामने 2 चुनौती है। हम सिर्फ अपने विजन को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कैंपस की चौहदी तक सीमित नहीं रख सकते। वी कैनॉट कन्फाइन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आइडिया ओनली अप टू 4 वॉल ऑफ आवर कैंपस, बाउंड्री वॉल ऑफ आवर कैंपस। हम सोसाइटी के लीडर हैं। मैं उसी एज ग्रुप में लगभग उतना ही संख्या बाहर है जो वर्कफोर्स में है, जॉब मार्केट में है। ये एक दायित्व हमारे सामने है। लगभग 20 करोड़ यंगस्टर्स की कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको उस कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डालने का दायित्व 2047 तक हम लोगों के कंधे पे है। इसी के बारे में एनईपी ने अनेक उल्लेख किया है, अनेक विषयों को उल्लेख किया है। मित्रों, उतना ही दायित्व नहीं, और एक बड़ा दायित्व है। हमारी आज की परिसंख्यन में हमारी वर्किंग एज ग्रुप 15 to 59, ये एज ग्रुप में भारत में लगभग 90 करोड़ लोग हैं आज की पॉपुलेशन में। उसकी लगभग 56% वर्कफोर्स में कन्वर्ट होती है। बाकी लोग सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था के कारण, कंपल्शंस के कारण या अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण वर्कफोर्स में नहीं आ पाते हैं। भारत को अगर डेवलप्ड इकोनॉमी होना है तब हमारी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को कम से कम 75 तक ले जाना है। अगर वो 75 होता है 90 करोड़ की, ये लगभग 75 लाख करोड़ हो जाएगा। मित्रों, नीचे यंगस्टर्स 20 करोड़, थोड़ा ओवरलैपिंग होगा, और 50-60 करोड़ लोग ऊपर की पॉपुलेशन में। 75 करोड़ यानी देश की लगभग आधे लोगों की, आधे लोग किसको देखेंगे, किस और उनकी अपेक्षा है? उनकी अपेक्षा भारत की हायर एजुकेशन इकोसिस्टम के ऊपर है। कैसे होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी आडिया जी ने हम लोगों के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा, एक फिलोसॉफी रखा। हम कोशिश करेंगे, एनईपी वही कहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जब मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को या इंटरप्रेट नहीं करूंगा, 5 साल हो गए हैं, मैं आप लोगों को एक चुनौती देता हूं, एक अपेक्षा भी रखता हूं, एक आपकी परम कर्तव्य ऐसे आप मानोगे, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। हमें हर एक यूनिवर्सिटी की अपने अपने मॉडल की एनईपी इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी की पेपर चाहिए। ब्रॉड फंडामेंटल्स हमारे सामने है। भारतीय भाषा आधारित होनी चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित होनी चाहिए। इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा, इसको हमें मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा, इसको हमें इंक्लूसिव करना पड़ेगा, इसको हमने अफोर्डेबल करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। हम इस दम्भ में और नहीं रह सकते हैं कि भाई चैट जीपीटी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करवाती है, इसलिए हम चैट जीपीटी में घुसेंगे नहीं, एआई में घुसेंगे नहीं, चैट जीपीटी नहीं, एआई में घुसेंगे नहीं। हम अपने कैंपस को चलाते हुए मेटावर्स को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ऐसा शायद सोचना
उचित नहीं होगा। ये करते करते क्या हम मौलिक विषयों को छोड़ें, हमारे विरासत को छोड़ें, हमारे मूल्यों को छोड़ें? मित्रों, सारा चीजों को अगर आर्टिकुलेशन करने का सर्वोच्च जिम्मेवारी कोई व्यक्ति है तो उस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। मित्रों, वाइस चांसलर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वाइस चांसलर एक कल्चर है। वाइस चांसलर एक लिविंग कल्चर की, आइडियल कल्चर की जीता जागता एम्बेसडर है। अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपने उदारता, अपने दृष्टि, अपने टीम वर्क की अप्रोच, हमारी अंदर खुद की डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मैं ये धृष्टता नहीं करूंगा, ये सब आप में नहीं है। आप में नहीं है तो ये इंस्टीट्यूशन नहीं होता। लेकिन मित्रों, इस विषय में जब चिंतन सत्र जैसे कुछ वर्ग में हम बैठते हैं तब हमारे सामने एक विषय स्वाभाविक आता है कि हमें कुछ विषयों को बीच बीच में याद करते रहना चाहिए। मंदिर और पुजारी और घंटी, ये तीनों स्थायी है। मंदिर भी वही है, उसमें घंटी भी है। पुजारी रोज कोई सुने या ना सुने, कोई भक्त आए या ना आए, वो जाके एक बार निर्दिष्ट समय में जाके घंटी बजा के आते हैं, दीप लगा के आते हैं। हमारी भूमिका ही ऐसे ही है। समाज में अगर एक जागृति लाना है, एक अलग जाना है, तब हमें ये प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। मित्रों, ये सारे विषय में केंद्र में कौन है? क्या टीचिंग फैकल्टी केंद्र में है? क्या पेरेंट्स केंद्र में है? या किताब छपाने वाले केंद्र में है? क्या एडुटेक के नाम पे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी लेके आते हैं वो केंद्र में है? या हमारे विद्यार्थी केंद्र में है? हमें एक रचना बनानी पड़ेगी जिसमें हमारी विद्यार्थी, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हमारी। कभी कभी हमारे सामने कई प्रकार की चुनौती आते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं देश की स्टूडेंट यूथ मूवमेंट से निकल के आया हूं। मेरे को कभी कभी लगता है कि अगर हम अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को थोड़ा ही आदर करें, थोड़ा ही उनको समझे। कभी कभी लगता है, विशेष करके वाइस चांसलर महोदयों को लगना स्वाभाविक है, स्टूडेंट ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकता है? करता ही है, आप क्या करोगे आगे? लेकिन अगर हम उनके साथ कोई रैपो, उनके साथ उनको मन को समझाना, भले ही वो इरेशनल बात कहे, लेकिन अगर उनसे हम संवाद करते हैं, शायद समाधान उसमें से है। समाधान बिना संवाद के संभव नहीं है। लगभग 70% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग एक 99% स्टूडेंट को हम संभाल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं। सबकी दृष्टि, सबके विचार, सबकी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अराजक तत्व रहते ही हैं, लेकिन 99% व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोग भी रहते हैं। चुनौती है कि हम उनको पहुंच सकते हैं क्या? इसलिए हमारी अप्रोच सारे विषय में स्टूडेंट्स सेंट्रिक होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स की अपना एक इनहेरेंट क्वालिटी है, इंस्टीट्यूशंस की भी अपना अपना एक क्वालिटी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर मैं उनको कोट करूं, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू इज इनर स्ट्रेंथ। जो कर सकता है वो उसकी निजी ताकत है, इनर स्ट्रेंथ है। बट व्हेन वी एडेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इन देयर होराइजन, when we added institutional strength, that expand their horizon of thinking, उनकी चिंता करने की प्रक्रिया असीम हो जाती है। ये सारे युवा अवस्था में विद्यार्थियों को मिलता है। और हमारे स्टूडेंट्स देश की स्ट्रेंथ है, हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ नेशनल स्ट्रेंथ है। मित्रों, मैं ये सारा विषय में आज इस समय में हम लोग हैं, विश्व की अर्थनीति बदल रहा है, विश्व की समाज नीति बदल रहा है, विश्व की राजनीति बदल रहा है, विश्व की कूटनीति बदल रहा है। ये सारे एवर इमर्जिंग व्यवस्था में हमारी लीडरशिप, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी थॉट क्लैरिटी, जो एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति को अपनाएगा, इतिहास बनाने के लिए कुछ सदी लगती है, लेकिन संस्कृति बनाने के लिए कई सदियों की इतिहास लगती है। भारत में ज्ञान की अपने आप में, शिक्षा की अपने आप में स्थान सर्वोच्च है।
हमारी सौभाग्य, हम सब उस विरासत के अनुयायी हैं, हम उस विरासत के प्रैक्टिशनर हैं। मित्रों, हमारी कंधे में बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। केवल भारत की 75 करोड़ लोगों की नॉलेज लेवल को एनहांस करना, उनको कॉम्पिटेंट बनाना, उनको वर्कफोर्स में ले आना, इतना ही नहीं है। विश्व की गरीब तबके के लोग आज भारत की ओर देख रहे हैं, पहले भी देख रहे थे। ऐसा नहीं कि हम ये मौका, इस प्रकार के अवसर पहली बार आ रहा है। अगर ऐसे होता तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन सिविलाइजेशन की इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। आखिर बुद्ध की ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया भारत से ही तो, इस विचार तो भारत की है। अगर विश्व की इतने बड़े मात्रा में बुद्धिज्म के आज अनुयायी है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की एक्सटेंशन है, ऐसा मानना चाहिए। आज भी कहते हैं कि विश्व की अनेक अग्रणी यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी की जो डॉक्यूमेंट और पढ़ाई की व्यवस्था है, अनेक भारतीय विश्वविद्यालय में वो नहीं है। पिछले लगभग आजादी के उपरांत पिछले 100-200 साल में भारत की अर्थनीति कॉलोनी के कारण इतनी मजबूत नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की परंपराओं को, ज्ञान को इतने गहराई से क्यों अध्ययन किया जाता है? क्यों कम दिनों में योगा एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण की विषय हो गया? क्या ये कुछ स्पोर्ट्स है क्या? ये एक जीवन प्रणाली है, एक जीवन पद्धति है, ज्ञान की, मन बुद्धि ज्ञान को एकत्रीकरण करने का एक उपक्रम है। यह भारतीय परंपरा है। मित्रों, एक एक चीज को अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी, पूरा दुनिया आज पर्यावरण के लिए चिंतित है, क्लाइमेट कंसर्न आज बहुत विषय बन चुकी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग भारत की जीवन प्रवाह में शुरू से ही है। भारत की अनपढ़ लोग, जिसको हम इलिटरेट आज कहते हैं, उनको भी पेड़ पौधा, पानी, पवन, वायु, ये सारे के बारे में एक इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग है। मित्रों, ये विरासत में इसी को कहा जाता है इतिहास। इसी से ही संस्कृति और परंपरा मजबूत होती है। हम ये सारे करते, जिसके बारे में सबने भी कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी इसकी एक मूल स्तंभ है। मित्रों, इस सारे पृष्ठभूमि के अंदर हमारी ये सब होगा कैसे? मित्रों, परिवर्तन सिनेमा या कोई अच्छे चित्र या कोई अच्छे वीडियो से नहीं होती है। आजकल दिनों में तो सोशल मीडिया ही नया गुरु बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर ही गुरु बन चुके हैं। मित्रों, ऐसे नहीं होगा। ये समाज जीवन में इस प्रकार की तरंग बीच बीच में आता है, ये सब तरंग ही है, लेकिन गंभीरता के साथ इसको सोचने वाले लोग ही एक परिवर्तन कर सकते हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में आज हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे हैं। आप में से अनेक मित्र पहले कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे होंगे या प्रोफेसर रहे होंगे या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम किए होंगे। इस सारे में एक क्रीम यहाँ बैठा है। भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रमुख लीडरशिप यहाँ बैठा है और हम एक अच्छे दिन में बैठे हैं। आज हमें कुछ संकल्प करने की समय आई है। कुछ हम लोगों को एकत्रित करके एक नई शिक्षा संस्कृति 21वीं सदी में, अगर भारत को आने वाले 2 दशक के अंदर एक भारतीय मॉडल ऑफ विकास, जिसमें समग्रता है, जिसमें एकात्मता है। भारत में हम एक चीज को, जीव निर्जीव, दोनों विषय को हम अलग नहीं माने हैं। हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं। फाइनली फिजिक्स की टाओ फिजिक्स में जो विज्ञान के महानुभव यहां बैठे हैं, वो मेरे से इस विषय को मैं उनसे कभी समझना चाहूंगा। एटम पार्टिकल में ही, इंफिनिटी के अंदर ही, शून्य के अंदर ही परमात्मा बैठता है, गॉड पार्टिकल होता है। ये विज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ रहा है। यह सोच भारतीय व्यवस्था में ही है। इसको एकात्म जीवन दर्शन को हमने माना है। हम एकांगी नहीं हो सकते, हम इंटीग्रेटेड है। एकात्म मानववाद की जो दर्शन हम लोगों के सामने है, ये भारतीय दर्शन की, जिसको बार बार हमारी ज्ञान सभ्यता ने रेनेसांस के रूप में उसको सामने लाया है।
मित्रों, 21वीं सदी में भारत को विश्व की जिम्मेवारी लेना ही होगा। भारत की नहीं, दुनिया की जो न्यू ऑर्डर आ रहा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ग्लोबल फोरम पे कहा है, अगर एआई एज ए न्यू इंस्ट्रूमेंट है, हमें इसमें से एथिकल एआई के बारे में सोचना पड़ेगा। मशीन कितना तक सोचेगा और मनुष्य कितना तक सोचेगा। ये सारे में जो आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सोचे हैं, मैं अगर 5 विषयों में अगर हम अपना अतीत को सेलिब्रेट करना है, अगर हमारी प्रेजेंट को हमें सेलिब्रेट करना है, इस 2 सेलिब्रेशन के पिलार पे हमें एक फ्यूचर की सृजन करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट ए न्यू फ्यूचर। उसके लिए आने वाले 2 दिन में मैं तो ये अपेक्षा रखूंगा, इस प्रकार के चिंतन शिविर आप सभी की कैंपस में भी होनी चाहिए, आपकी इन हाउस लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए। आर्या जी जैसे महानुभव एक आधा में जाएं, लेकिन आप ही लोग बैठो, वाइस चांसलर उसकी लीडरशिप लें। आप नहीं करते हो ऐसा भी नहीं, आपकी एकेडमिक काउंसिल है, आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेकिन उस बंधन को तोड़िए। आप चुनिंदे 10, 20, 50, 60 लोग बैठे, 2 दिन बैठे, 2 रात रहे इकट्ठा, सहवास करें, योगा करें, और ये इस विषय पे लेके बैठे कि मेरे यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में नेट जीरो हो पाएगा क्या, मेरे यूनिवर्सिटी कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कर सकता है क्या, मेरे यूनिवर्सिटी इतना ही आकर्षित होगा कि दुनिया के विद्यार्थी वहां पढ़ने आए थे, ऐसे ही नालंदा लोग पढ़ने नहीं आए थे। मैं कभी इस प्रदेश के एक शहर में गया था जहां संयोग और सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था, बड़नगर में कभी हुएंसा आए थे, चाइनीज परिव्राजक भारत की अनेक स्थान गए थे, उसमें गुजरात के बड़नगर भी आए थे। मित्रों, क्या था इस समाज में, क्या मॉडल था, क्या हम उस आधार पे, हमारे विरासत के आधार पे, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारा यूनिवर्सिटी को हम एक आइडियल पॉइंट नहीं बना सकते हैं क्या? सिर्फ एक मटेरियल इंस्टीट्यूशन नहीं, एक फिजिकल इंस्टीट्यूशन नहीं, एक फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशन, जहां उस इलाका के, उस समाज के लोगों के आकर्षण हो। कोई मेरे मन में समस्या है तो मैं गुरु को जाके पूछ के आऊं, मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी घूम के आ जाऊं। मैं इन दिनों में कुछ यूनिवर्सिटियों को घूम के आया हूं। मित्रों, मैं आपकी काबिलियत को कितना भी प्रशंसा करूं वो कम होगा। ये आप NIRF और NAC इसमें आना ही चाहिए, लेकिन उसकी स्पर्धा में मत पड़िए। नहीं करना चाहिए, मैं वकालत नहीं करूंगा, करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को NIRF में अपने आप के साथ कंपटीशन करके ऊपर आना ही पड़ेगा। NAC में सबको हाई स्कोर तक जाना ही चाहिए। लेकिन मैं इसी सीमित संसाधनों में कुछ यूनिवर्सिटियों को देखा जिन्होंने अच्छा काम किया है, कम समय में किया है। कुछ विरासत में हमारे साथ चुनौती है, चुनौती भी हमको ध्यान में है, संभावना भी हमारे सामने है। हमको लीडरशिप लेना पड़ेगा। अगर मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि हमें भारत के अंदर से एक नेक्स्ट जेन की इमर्जिंग एजुकेशन सिस्टम देना है, जो विरासत से मजबूत होगा, AI का भी दक्ष होगा, जिस एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, विज्ञान के छात्र समाज विज्ञान में भी उतना ही प्रभावी होगा, इतना भी तज्ञ होगा, भारतीय भाषाओं के ऊपर उसको उतना ही अनुराग आसक्ति होगा, उसकी मस्तिष्क से सदैव नवाचार की कल्पना सृजन होने की आवश्यकता है, इनोवेशन सेंट्रिक होना चाहिए। उसकी अंदर हमें ऐसे एक चरित्र लाना पड़ेगा जो समावेशी होगा, सामग्रिक होगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कहेगा कि भाई देश की अर्थनीति जैसे भी जाए, मेरा इंजीनियरिंग डिजाइन तो ठीक होगा, ये नहीं चलने वाला है आने वाले दिनों में। मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक ये दोनों परिपूरक है। मित्रों, इसकी समाधान तब जाके हो पाएगा अगर हम इसको भारतीय शिक्षा प्रणाली करके हम उसको इमर्ज कराएंगे। एक नई आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जिसमें भारतीय भाषा, भारतीय विरासत पे विश्वास है, जो टेक्नोलॉजी को विश्वास करता होगा, जो इमर्जिंग होगा, होलिस्टिक होगा, तब जाके हम एक न्यायोचित समाज की परिकल्पना कर पाएंगे। मैं
अपेक्षा रखूंगा ये 2 दिन में सारा चीज इकट्ठा हो जाएगा, ये भ्रम में मैं भी नहीं हूं। लेकिन हमें 21वीं सदी में एनईपी को सृजन करना, इंप्लीमेंटेशन की 5 साल के उपरांत हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक टाइम फ्रेम बनानी पड़ेगी। अगर हम 2035 तक 50% जीआर करेंगे, जिसमें मैं और एक आड़ ऑन किया कि हमारी दायित्व बनता है आबादी की आधे लोगों की स्किल, रीस्किल, अपस्किलिंग की दायित्व लेना पड़ेगा। तब हमारी नीति क्या होगा, हमारी मूल्य क्या होगा, हमारी वैल्यूज क्या होगा, हमारी मॉडल क्या होगा। मित्रों, कोई भी समाज तब मजबूत होता है जब उसकी विद्वान उस समाज को समझते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं। आप भारत की सबसे सर्वोत्तम विद्वान समाज की प्रतिनिधि हो। आप भारत की सिर्फ आपकी दायित्व आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है, आपकी दायित्व नया भारत को, आधुनिक भारत को लीडरशिप पोजीशन में रह के आगे ले जाने के आपका दायित्व है। मैं आपको इस 2 दिन की चिंतन शिविर में फिर स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी और दूरदर्शी उद्बोधन के लिए। आपके प्रेरक शब्दों ने इस सम्मेलन की एक मजबूत नींव रखी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। नाउ टू ऑफर आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर दिस मोमेंटस beginning, I now invite Professor Rama Shankar Dubeji, Honorable Vice Chancellor, Central University of Gujarat, to deliver the vote of thanks. Most respected परमादरणीय परम सम्माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी भारत सरकार, ऑनरेबल चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, ऑनरेबल हायर एजुकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर विनीत जोशी जी, एडिशनल सेक्रेटरी सुनील कुमार बर्नवाल जी, वाइस चांसलर फ्रॉम ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आवर लर्नेड स्पीकर्स, delegates, ladies and gentlemen, and officials from University Grant Commission and Ministry of Education. With immense pleasure and deep sense of respect, I extend a very heartfelt thanks to all of you for your presence and for your participation in these 2 days Vice Chancellor Conference. I sincerely express my thanks to you for visiting this vibrant land of Gujarat, more specifically to this iconic location of the Statue of Unity. This revered site of a Statue of Unity marks as a tribute to the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, whose vision of Ek Bharat, Shresth Bharat led to the foundation of integrated and united India. At the very outset, I wish to express my profound gratitude and respectful thanks to our Honorable Education Minister of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, for his gracious presence and his inspiring words. Sir, under your dynamic and visionary leadership, India's higher education landscape has witnessed a remarkable and unprecedented transformation. Your tireless efforts and strategic foresight have been instrumental in translating the vision of National Education Policy 2020 into reality, tangible reality on grounds. We remain ever grateful to our Honorable Chancellor of Central University of Gujarat, Dr. Hasmukh Adhia ji. We are really fortunate enough to have him as our Chancellor of the university. Dr. Hasmukh Adhia ji is also Principal Advisor to the Chief Minister of Government of Gujarat. Dr. Adhia ji stands as a true symbol of wisdom, humility, and integrity. As a mentor and guide, he always remains available for us, for our institutional growth, and for shaping our future vision. I express my sincere thanks to Dr. Vineet Joshi ji, Secretary Higher Education, Government of India, for gracing us with his presence and articulating the agenda of this two days conference. I am thankful to Dr. Sunil Kumar Barnwal ji, Additional Secretary, for his gracious presence and welcome remarks. I extend my heartfelt gratitude to all the distinguished speakers, all the Vice Chancellors from across the country,
officials from University Grant Commission. Here I'd like to tell just few words that the core philosophy of higher education is national education policy is to produce global citizens rooted in Indian culture. The great saint and philosopher of India, Swami Vivekananda ji, he used to tell that the purpose of education is character building, purpose of education is man making, and purpose of education is nation building. Echoing the same vision, the great patriot of Indian nation, Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji, he used to tell the core philosophy of education is holistic development of personality. And he used to tell that dharma and ethics should be integral part of education. He used to tell his students that satyena brahmacharyena vyayamena vidya deshbhaktya atmatyagena sammanarha sada bhava. The NEP 2020 emphasizes for holistic and multidisciplinary learning and the integration of Indian knowledge system in curriculum. And at the same time, we have to produce such practical real-world skill sets in students that align with the evolving demands of global job market and industry. Now, may the spirit of commitment, patriotism, national unity, and exemplary leadership of Sardar Patel guide us and inspire us in our all deliberations for the 2 days and our outcomes. With these words, I thank you all once again. Thank you very much. Thank you, sir. We will now take a short break of 20 minutes for photo session just outside this hall and for tea. Kindly proceed to the designated area. We will reassemble at 10 a.m. for the first thematic session. Wishing you an insightful and inspiring day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.